Hey guys, welcome back to my channel. Now I am going to share the most exciting event of our school with you. I think you can guess what it is. Yes, that's the sports events of our school. Now we are diving into the heart of the action as we capture the adrenaline pumping moments of our school sports event. From the thunderous cheers to the nail biting finishes, get ready to join on the roller coaster of emotions. Students are sitting according to house-wise. You can see that the field is buzzing with So excitement. let's begin the day with lots of vigor, passion, and enthusiasm. Shivaji House boys, बेटा बैठ जाओ. Come forward and Tagore House. Shivaji House versus Tagore House. First match. Okay. Now next match. Ashoka House versus Raman House. Boys, class 9. Team captain. Team captain. Team captain. Team captain. एक गर्ल्स कम हो जाओ बेटा, 13 हो, only 12. दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही यंग स्टार बच्चे एकदम तगड़े वाले.
हारेंगे नहीं, सोच लिया है। नहीं हारना है। बोलते लोग रस्सी को अच्छे से पकड़ लीजिए और फिर थाम के बैठिए। रेडी? उधर से हमारी यंगस्टर मैडम बैठी है, उठ नहीं रही है बिल्कुल भी। अर्चना मैम आइए आइए प्लीज, जल्दी आइए मैडम, आइए प्लीज। मैडम ने बहुत जबरदस्त दिखाया, पर कोई बात नहीं, ये हमारी चलो एक साइड चेंज करेंगे दोबारा से। ओके, बहुत साइड रेडी। हाउ द जोश, हमारी आवाज हाउ द जोश। आप लोग ज्यादा थके तो नहीं हैं? तो पहले तो जो जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हारे हैं कोई दिक्कत नहीं, आगे के लिए आप तैयारी करिए। पहले तो आदरणीय वाइस प्रिंसिपल मैम, अध्यापकगण और टीचर नहीं जो भी हैं और बच्चे और हमारे आदरणीय शिक्षक, पहले सबको बता दूं कि जोरदार तालियों के साथ अपना मोटिवेशन खुद करिए। और मैं आपको बता दूं सोनू सर के बारे में थोड़ा सा। सोनू सर बाई बर्थ ही ब्लाइंड है और उन्होंने ब्लाइंड होते हुए भी इतना सारा अचीवमेंट किया है हमारे देश के लिए। जकार्ता जापान में 2018 एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व शॉटपुट एंड डिस्कस में किया था और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नेशनल में नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं और अभी भी 45 ईयर ओल्ड के होते हुए भी अभी भी वो पूरे जोश और उमंग से भरे हुए हैं। अभी कल परसों एक खेलो इंडिया पैरा गेम हो रहा था और उसमें भी उन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये सच में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आप सभी के लिए, क्योंकि इस उम्र में अगर वो कर सकते हैं तो आप तो यंग खून हैं, आप तो इस देश का यूथ है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में चाहते हैं उस क्षेत्र में अपना नाम करिए। अपने माता की